Friends, for a social community like My Retired Life Foundation, it is extremely essential that we listen to all of us. All of us have got plethora of knowledge and skills in the various areas gathered over substantial period of time, and it's time that we listen to each other, we learn from each other, and that's the way to go forward. This was the background under which the program Sabki Suno was conceptualized. Friends, listen to the golden voices of our members. मेरी कहानी एक व्यस्त जीवन में आजकल की जिंदगी की आम कहानी है। हम अपने व्यस्त जीवन में काम के अलावा कुछ और सोच भी नहीं पाते हैं। कभी यह सोचने का विचार भी नहीं आता है कि हमें अपने खास शुभ चिंतकों के लिए भी समय देने की आवश्यकता है। कहानी एक पति और पत्नी के बीच संवाद के रूप में है, जहां पत्नी अक्सर अपने पति से पूछती रहती है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खोया। जवाब में पति हमेशा अपने काम संबंधी अवसरों को खो जाने की बात करता है। अंत में जब बीमार पत्नी से पति ने पूछा कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खोया, तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं खोया, क्योंकि उसने अपने पति को हरदम अपने पास ही पाया। यह सुनकर पति की आंखों में आंसू भर आए कि क्यों उसने अपनी पत्नी के अगाध प्रेम को नहीं पहचाना और हमेशा उसकी उपेक्षा करता रहा। साथियों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो करना है वर्तमान में ही करना जरूरी है, शायद कल कभी नहीं आए। अपने काम के अलावा अपने शुभ चिंतकों के लिए समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। अपने प्यारे लोगों के प्रति आभार प्रकट करो, उनकी मदद के लिए सदा तत्पर रहो। कल की प्रतीक्षा कभी मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। Friends, something on laughter. Well, World Laughter Day is celebrated on the first Sunday of May every year. Laughter is a simple physiological reaction to something which is funny or humorous. It comes free and natural to all. Smile and laughter both are contagious. That is why it improves relationships. It strengthens your immune system by decreasing the stress hormones, and hence it is a great stress reliever. It diminishes pain by releasing endorphins, which are feel-good chemicals. It is rightly said that laughter is the best medicine. And yes, it is like internal jogging. 10 to 15 minutes of laughter burns 40 calories. A popular aphorism says, it takes 43 muscles to frown and only 17 muscles to smile. Laughter may not add years to your life, but it will surely add life to your years. Thank you. I have found the treasure of the holy name. My ever restless mind has become calm with the regular utterance of this holy name, and I am free from attachment, and in its place, pure knowledge of existence has developed. The cycle of birth and death, along with its desires and illusions, have been exterminated, giving rise to bliss alone. Nanak says, only when the Lord's grace touches a being will he sing Govind's name. मैं धन पायो हरि नाम, माई मैं धन पायो हरि नाम, माई मैं धन पायो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटो, मन मेरो धावन ते छूटो, कर बैठो विश्राम माई, कर बैठो विश्राम माई, मैं धन पायो हरि नाम, माई मैं धन पायो हरि
Today I would like to tell you a small story how to take darshan in temple. There was a lady who used to go to temple every day for taking darshan. One day she told the priest that from next day she won't be coming to temple. By hearing this, the priest got very surprised. He asked what is the reason behind it. Then she replied that people come here for darshan, but instead of taking darshan, they get busy using their phones for business talk. Some exchange gossips. Some of them they show off that they are great devotees, whereas they are just pretenders and have no devotion. So I feel very uncomfortable during worship. The priest said, whatever you are telling is right, and I agree for that. But before taking the drastic decision, I will give you one small task. Are you ready for that? When the lady, she agreed and she told, okay, you give me the task, I will do it. The priest gave her a glass full of water. He asked her to do 3 parikrama of the deities. He also instructed that while doing so, not a single drop of water should fall on the ground. She followed the instruction and did exactly as told by the priest. She showed the glass to the priest and said, I have completed the task without a single drop falling on the ground. The priest was very happy to see this. Then he asked, did you notice any person talking on the phone or gossiping? Did you notice anybody pretending to be a devotee? The lady said, no, I did not notice anyone. The priest asked them, do you know why this happened? Because your whole focus was on the glass and water. So when you come for darshan, if you keep full focus on the God, you will not notice anything else and your mind won't be diverted anywhere. The lady realized her mistake and thanked the priest for showing her right path, that the focus, concentration, bhakti and shraddha is the real darshan to God. I am going to sing a song which is dedicated to all the migrants across India. दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना. दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब है दीवाने. किसके आगे रोना रोए देश पराया, लोग बेगाने. दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना. दुखी मन मेरे. செந்தாழம் பூவில் வந்தாடும் தென்றல் என் மீது மோதுதம்மா. செந்தாழம் பூவில் வந்தாடும் தென்றல் என் மீது மோதுதம்மா. பூவாசம் மேடை போடுதம்மா, பெண் போல ஜாடை பேசுதம்மா. அம்மம்மா ஆனந்தம், அம்மம்மா ஆனந்தம். So namaste to you all. In fact, I want to tell something about the experience of the lockdown to me. Let me admit that it has been, today is the 63rd day and maybe another 5 days left for 4th phase to complete.
But the experience for the lockdown has been very positive and productive for me. And first, I tell you it has made me to realize two lessons on the secret of happiness. The first one is that we need to be caring and giving back to society and nourishing nature. In fact, we have a small terrace garden and I directly involve myself in watering the plants and nourishing the plants. I know how it has created genuine happiness in me. In fact, every summer we used to dust our house twice, once in the morning, once in the evening. But now this was not required during this corona time. And we have realized the air has become more cleaner. And I came across a global report in which it has been revealed, it has been found that the carbon dioxide level in the atmosphere has reduced by 17% post-corona. So what it has given me the secret of happiness is the choice of being wealthy or being less wealthy but living with nature. I have a clear preference for the latter now. The second secret of happiness realized during this lockdown, manage with less than what we think we should have. I realized the words of Carl Richards on this. What it quotes in his book is, manage more with what you have is much more difficult, little less than what you need. Actually, this the latter part can be managed very easily by making a little lifestyle adjustment. ये क्या किया, सबको घर में बिठा दिया। कोरोना ने सबको घर में बिठा दिया, लेकिन एमआरएल ने एंटरटेनमेंट और ज्ञान का भंडार जूम और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कर दिया है और अपनी वैचारिक क्षमता को चालना भी मिल रही है। मेरी बेटी पेंटिंग कर रही है, उसको मदद कर रही हूँ, उनका नया टी शर्ट बनाने का प्रयास कर रही है, उसका आस्वाद लेना चालू है। अपने पास बहुत समय है ऐसा लग रहा था, लेकिन कैसा टाइम पास होता है समझ में भी नहीं आता। सिर्फ शॉपिंग, रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना और खुली हवा में फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना नहीं हो रहा है। घर में बैठ के ही कोरोना को हम भगा सकते हैं और घर में बैठ के ही फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। यही हम लोग कर रहे हैं। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। आनंदी और सुखी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने 1980 में K11 प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC ज्वाइन किया। उस समय मैं किसी गैदरिंग में कुछ नहीं बोलता था, बोलता भी था, बहुत कम बोलता था, यानी अपने कार्य के अलावा किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं बोलता था और सदा यह कोशिश रहती थी कि मैं ना बोलूं। फिर 1997 में मेरा ट्रांसफर जोरहाट के प्रोजेक्ट आसाम में हो गया। वहाँ मैं हेड ऑफ टेक्निकल बिजनेस ग्रुप था। इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का हेड बन गया। 1997 में ही डायरेक्टर ऑफ ड्रिलिंग रिटायर हुए। यह डायरेक्टर का पोस्ट जस्ट ONGC चेयरमैन के नीचे होता है। उनको रिटायरमेंट फेयरवेल देने के लिए जोरहाट आमंत्रित किया गया। छोटी सी गैदरिंग थी, मुझे बाहर दिया कि इसका संचालन मैं करूं। मैं तो परेशान था, पर निश्चय किया कि जैसे भी उसका संचालन करूंगा और मैंने फिर इसका संचालन किया, सफलतापूर्वक किया। बाद में इसके डिटेल में आपसे बात करूंगा। Dear friends, I am going to talk on mind balancing. God has created each one of us differently. There is some superpower which is acting on all of us. Our looks, our behavior, the way we think, everything is different. Today's issue is each and every person wants to become superior. So there is a lot of competition going on. Healthy competition is good, but if it goes beyond that, it becomes ego issue. It leads to bitterness in the society. Another issue is that people, instead of working hard and smartly, want quick results, and thus they get frustrated when they do not achieve their results. This leads to anger, stress and tension. We should control our thoughts and put them in a positive way by practicing
practicing yoga, prayers, meditation, or by listening to good music. One can also practice mudra. It has magical powers to control your mind. It sharpens the brain and empowers the mind and nervous system. This can be used as lockdown mantra. Thank you.